नमस्कार मु दुर्गा प्रसाद इनक्यूबेशन मैनेजर AIC-Nalanda आपण समस्त को स्टार्टअप कथार ए 4th एपिसोड को स्वागत करुछि। व्यूअर्स स्टार्टअप्स मानकर जर्नी रे टेक्नोलॉजी आउ इनोवेशन रो रोल बहुत इंपोर्टेंट आउ ए विषय रे किछि आलोचना करिया पई आज आम संगे आमर गेस्ट अछंती डॉक्टर विजय कुमार साहू। ही इज हेड ऑफ IPFC and WIPO-TISC at NRDC Visakhapatnam. Sir, welcome to the chat show. Thank you. And this is a show that we do normally for the startups, aspiring entrepreneurs. जो थे आम स्टार्टअप्स मान को लेकिन तांकर बहुत जेनेरिक इश्यूज उपर चर्चा करूँ किंतु आम जहाँ आजिकल सोसाइटी रे ट्रेंड देखुचु कि टेक्नोलॉजी इज द न्यू बैकबोन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बट बिफोर कमिंग टू दैट आमे आपणकर जो लंबा एक्सपीरियंस रही इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी IP फैसिलिटेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपण ए चेंज टाकू सोसाइटी रे केमिति देखुछंती? व्हाट बेसिक रोल और मेजर रोल डू यू सी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन प्लेइंग? Thank you, Durga Prasad. At the outset, I would like to congratulate AIC-Nalanda for giving this platform to share our thought and vision. And जोटा आपण आज पचारुछंती intellectual property of technology. In the changing paradigm of ecosystem of innovation, we must realize and we need to change because there is a need of reform, perform and transform, and we need to change our mindset as per the demand of time. Particularly intellectual property of technology जोटा आपण entrepreneurship पाई कोन जो जेनेरिक वर्ड टर्मिनोलॉजी पचारुछंती से हिसाब रे मु किछि कहबी। देखंतु महात्मा गांधी को स्वप्न थिला सेल्फ रिलायंस होम ग्रोन आइडियाज एंड टुडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज ए विजन सेल्फ रिलायंस। यू आर एवर दैट our dependency on import of technology is very high, and at the same time this is the time government has a all enabling ecosystem like AIC-Nalanda, that platform which I am sitting today here. This platform create a momentum and enabling ecosystem to the startup who can get the benefit of support, and that support that will create them a confident. And the role of NRDC AIC-Nalanda is giving shoulder to entrepreneurs so that they can mitigate the challenge in the market. So I'll come to the point, intellectual property right. We have seen and we have realized the role of intellectual property right in the WTO ecosystem when there was a case on patenting on haldi, patenting on basmati rice. So we need to protect because it is a protectionism WTO ecosystem under the TRIPS. So everyone, not only startup, whoever create any kind of invention in the form of patent, trademark, design, copyright, all are their intellectual property, their creativity, their invention. They must take the ownership. And in fact, I will tell you why this innovation and invention is need of the hour, because our innovation index globally, we are 46 rank. Second largest populated country in the world, but unfortunately our innovation index is, in a second digit. So if we want to compete globally, in all case, to mitigate the challenge what we have a mandate from United Nations Sustainable Development Goal, we must have IP protection and technology that can mitigate the challenge of the Sustainable Development Goal. सर किंतु आमे देखू कि आग जो ट्रेडिशनल बा कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ बिजनेसेस थिला सेथिरे आपणकर ए जो इनोवेशन पार्टटा बा कोनोसी प्रकार गोटे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आसिकरी एंटरप्रेन्योरशिप रे सेंटर रे रहिबाटा सेटा नथिला। विथ पीपल गेटिंग मोर एक्वेंटेड विथ टेक्नोलॉजी प्रोबेबली मोस्टली इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड वी आर सीइंग इट इन अ मोर रैपिड मैनर। तो आजिका डेट रे जो नुआ जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आछंती वी सी दैट दे आर मोर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन लेड। सो इन अ वे द एंटरप्रेन्योरशिप इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। जेतेबेले आमे ए टेक्नोलॉजी कथा कहू, टेक्नोलॉजी तो आमे कोनोसी जियोग्राफिकल बॉर्डर रे बांधी की रखि परिबानी, से तो ग्लोबली एक्सपैंड करिवो, तार ग्लोबल इंप्लिकेशंस भी थाई पारे। इन दैट केस आपण इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रो प्रोटेक्शन टाकू स्टार्टअप्स मानक पई केते सिग्निफिकेंट बोली भाबुछंती?
as I told, ownership, somebody has done a hard work and he or she has created any IP. So as you yourself told that geographical location, there is no boundary, but there should be a benefit sharing. The creator of the IP must get benefit. The originality should be there. Unfortunately, you might be seeing in our society, every second days there is a infringement of IP infringement from startup, academia, industry, MSME. This not only create problem for an individual startup or to the state, it has been playing a very challenging role to the government also. And you will be surprised, in the recent time, the United States kept India as a priority watch list called Special 301 provision before India. Okay. That means India, our country, is kept as a priority watch list on IP violation by the US government. This is one of the biggest challenge at the bilateral level. So since we are part of the WTO and we are a member country, we must harmonize IP system and we must provide IP support mechanism to all the stakeholders of the knowledge economy, including startup. And I'll come to the conventional practice of entrepreneurship to this high-end technological-led entrepreneurship. Let me tell you, in any products today, whatever the product we are using, that product is protected by the brand. And that brand is nothing but the goodwill gesture as a consumer, as a customer. So that brand is nothing but trademark. In a terminology in Hindi, जो दिखता है वो बिकता है. So for a entrepreneur, ultimately उसको लोगों को पता होना चाहिए ये product किसका है, वो logo उसका पहचान है, वो brand उसका पहचान है. That connect with the customer, develops with the brand. Another thing, design. Today, design innovation plays a very important role. Whatever you see our household product, all are something designed, and we are paying for that. And the design appeal to our eye. Correct. Being a customer, we like it and we pay for it. So that is also ornamental IP as far as the industrial design is concerned. Patent, unfortunately, India is much more behind as far as the patent filed in China, Korea, Taiwan, including US. In China, more than 15 lakhs patent filed. In US, more than 7 lakhs patent filed. But in India, our patent protection is very limited to less than, I think, 55,000. But unfortunately, we have invention. Somewhere we are not able to create awareness to the people who can protect. Protected. Protection is important because ये आपका है, ये आपका मेहनत है. You must protect. We have in the history also, it has been told that Ekalavya infringed the IP of Guru Dronacharya. So there was also a punishment. So same way, if somebody violate intellectual property, knowledge must be acknowledged. The creator must get reward, recognized, so that innovation ecosystem we can strengthen. And this is nothing but the regional innovation ecosystem created by you at AIC level that will certainly create momentum to the national innovation ecosystem and that percolate to international innovation ecosystem. Absolutely. So everyone we must think, Honorable Prime Minister of India always touch upon, to protection is most important, so that if you are not protecting, somebody is protecting, next day he will own the IPR. Correct. तो सर एबे जमती आमे देखो कि बहुत स्टार्टअप्स बिजनेस आरंभ कला बेलू को दे हैव अ वेरी कीन अटैचमेंट टू देयर प्रोडक्ट ऑल्सो टू द मार्केट एंड द कंज्यूमर्स किंतु जहाँ आपण कहले ब्रांड बिल्डिंग रो पार्ट रे निजर लोगो रो ट्रेडमार्क करैबा हो किंबा निजर डिजाइन को राइट सिक्योर करबा हो बा कोनोसी प्रकार पेटेंट की कॉपीराइट फाइलिंग हो आपणकर एते लंबा एक्सपीरियंस रो ऑब्जर्वेशन कोन कहूची डू स्टार्टअप्स आर एनकरेज्ड इन सम वे आर दे नाउ सफिशिएंटली अवेयर कि से माने आईपी प्रोटेक्शन विषय भाबिबा दरकार I will not talk about awareness. Startup must think due diligently before venturing to the market. You need a freedom to operate. And if you want to get a freedom to operate legally, one is the intellectual property right protection. So I will urge and request all the startup of Odisha and across the country, anyone, if you need IP support, you are requested to get in touch with us. We are going to give you full free IP support. You need not to pay anything
as far as filing of IP to grant of IP for patent, trademark, design, copyright, NRDC will take care your IP if you are a DPIIT registered startup. And I'll request through you, and in fact, you have taken that responsibility of creating such momentum through AIC. I think more than 14 startup has got the IP support from us. So I am so happy. So you kindly percolate this message, and also from this program people should understand, and you are requested to take the support, because this is a national organization for the supporting to not only to the startup, academia, industry, MSME in the country. We have been doing that, and that's our mandate and mission. So let's connect, collaborate, cooperate, and make the difference from this activity. Sure sir. जेहेतु आपण एकेडेमिया और इंडस्ट्री कथा भी कहले, एठी गोटे थॉट आसे मन को कि आगुरु आमे देखु कि रिसर्च जो शब्दटी जदियो इंडस्ट्री मानकर R&D डिपार्टमेंट बहुत पुराना, बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज बीन मोस्टली लिंक्ड विद द एकेडेमिया, and any kind of research activity has been limited to paper publications or thesis work and everything. So how important is that कि आमर आजिर डेट रे जो इनोवेटर्स माने इनोवेट करछंती किछि नुआ जिंस on the basis of technology ho, on the basis of social impact ho, when they bring up a new idea or a new innovation, how important is that technology is also commercialized, तार market opportunities और commercialization रे कौन रोल प्ले कर परिबे? In fact, that is our mission, bringing mind to the market, Yes. lab to the land, technology at bedside to the bedside. That's our mandate, and I do also in my activities as far as my organization is concerned. So we not only file only IP. Once we file a IP, we see the next level to prototype, scale up, validation, then commercialization and monetization. So we need to bring both Saraswati and Lakshmi together. Saraswati, the idea. We need to validate that idea, we need to protect that idea, and we need to create the value from that idea, and then we need to monetize that idea. So in that journey, we need a freedom to operate, and that freedom to operate is nothing but protection of intellectual property right. And that's we talked in our language, innovation readiness level to the society. Right. तो नहीं एटा बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत स्टार्टअप्स सर जानी भी न थांती ए जिनसटा कि तांको इनोवेशन टा इन व्हाटएवर फॉर्म इट इज, इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड. आउ वेरी राइटली पॉइंटेड आउट बाय सर कि बिफोर ऑपरेटिंग और बिफोर एंटरिंग द मार्केट, इफ दैट इज गेटिंग सिक्योर्ड, देन यू हैव अ फ्रीडम टू ऑपरेट, एंड यू आर neither you infringe upon anyone nor anyone infringes your right. So it's a very significant message that you have conveyed, sir, and we at AIC-Nalanda are also looking forward that we could support startups on this intellect forum. Towards conclusion, sir, I would like to also understand कि our educational system रे IP education को आगुरु सेमती एते बढ़ावा दिया हो नथला, आउ देखु आमे कि ए टेक्नोलॉजी एजुकेशन रे भी नॉर्मली धीरे धीरे हमको ता विषय अवेयरनेस दिया होतला. But with the initiatives of the government and operations like agencies like your and government offices, एबे धीरे धीरे आमे बहुत ग्राउंड लेवल रु भी IP एजुकेशन ऊपर स्ट्रेस दउछु. So how important do you think कि को लेवल रो पिला IP विषय जानिबाटा is in the benefit of their future? In each level, we need to create a momentum, because I have a 10-year-old girl, my daughter. Always she do some creativity in art and all this thing. She had a passion to do that. Whatever she is doing, that is nothing but her right over her creativity as far as that design or that picture is concerned. So that is her intellectual property. Because that is her hard work, that is her original work. So original work must persist. So we have to ask, and we have to connect her, we have to advise her that this is your IP in the form of copyright. Correct. Education I am talking about. All literary work, artistic work is protected as a copyright, and that's your copyright, and you need to protect if you want to protect, and it is once you create, it's your copyright. Same way in other. Unfortunately, we become of many reasons, we become a copycat. And today
lot of technology has come to mitigate this copycat plagiarism. Plagiarism is rampant, particularly it has been reported in educational ecosystem, and government has also taken a strong decision on mitigating plagiarism. And for that we have many technology to check this plagiarism. That is also one of the issues we must look into, since you are asking about educational. Then I will talk about research and development, creativity, project work. Normally you see in B.Tech student, when he do a project, just copy from somewhere and submit it. Submits it. But what is his original work he is doing? आपको काम में कोई आउटपुट मत देखो, आप मेहनत क्या कर रहे हो. आप कहीं से कॉपी करके प्रोजेक्ट दे के डिग्री तो ले जाओगे, लेकिन मार्केट में क्या करोगे. तो you need skill and innovation to mitigate the challenge, and that's your IP and that's your brand to showcase your activity to the market and knowledge driven ecosystem. Very rightly said, sir. तेबे viewers आपण माने जानि नथिबे, and sir this is a bit personal also. आपनकर जन्म कलाहांडी जिलार गोटे छोट गाँव शिक्षा लाभ कले बलांगीर रु तारपरे उच्च शिक्षा लगी गले दिल्ली और कोपेनहेगन गोटे दूर गाँव आसिकरी आज एते बड़ रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालुछन तार पछे केते परिश्रम करिथिबे आपण से अनुभूति की नहीं करी आपण आजिर युवा समाज के काना मेसेज देबा के चाहिए. हाँ, थैंक यू दुर्गा बाबू. आउ मुई एक्चुअली कलाहांडी गोटे आज भी गोटे वेरी टिपिकल गाँव आसी. मुझे जब भी केसिंगा रेलवे स्टेशन उतरी से फिर सेनु फिर मत 50 किलोमीटर गाँव के जावाक पड़सी. तो कहवा के गले यहाँ मैंने क्वेश्चनटा मोर मैंने दिल के छुईला भाया क्वेश्चन है. तो मुई बलांगीर पढ़ली, तापरे GNU रे पढ़ली, तापरे NRDC रे जॉइन कली, तापरे इनोवेशन मैनेजमेंट उपरे कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल रे भी पढ़ली. आउ मुई मोर 16-17 वर्ष मैंने कैरियर रे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली छे मते. आउ बहुत चैलेंज मिटिगेट करि पारि छे. आ बहुत मोर माने लोग गाँव लोग मन के भी माने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जेन मोर सहयोग हेबार कथा, स्टार्टअप रे हो कि जॉब रे हो कि ट्रेनिंग रे हो कि केने पढ़वार माने पढ़वार लगी भी स्कूल फीस हेले भी मुई माने कि इवन यूनिवर्सिटी एडमिशन आमर GNU रे दिल्ली रे भी एडमिशन बहुत पिला के आमर एडर पिला मन के मुई फॉर्म भी पठाउथली. बहुत पिला सिविल सर्वेंट भी अछने. इवन मेनी सिविल सर्वेंट मोर हॉस्टल रूम रे रहउतले GNU रे. आज से दे आर वर्किंग विथ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो इन ऑल्सो अदर पार्ट ऑफ द स्टेट. तो मते सबके मुई कहवा के चाहेमी गोटे जिनिस जे आपण माने केबे निज के निज अंडर एस्टिमेट नहीं करन जे मुई नहीं करि पारे. आपण सब किछि करि पारबे. काहे जी आमे होजा ओरिजिनल जन ऑर्गेनिक नहीं बोलसा. तो ऑर्गेनिक छुआ आमे पूरा माने माटी के एंता पानी भी पीछा जे आमे सब कुछ झेली पारमा. कि आमर कॉन्फिडेंट दरकार आउ कैपेसिटी आमके बिल्ड करवाए पड़वा. कहाँ जी बोला आम गाँव हे इकोसिस्टम रे नाइन अब तो कैपेसिटी बिल्डिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. आउ गोटे जिनिस कहमी जेनटा कि स्किल लैंग्वेज आम जिते लैंग्वेज शिखी पार्मा से आमर लगी ऑर्नामेंट है. आपन जेन देश भी जौन आज डेट्रे चाइनीज लैंग्वेज गोटे एंता लैंग्वेज है ऑर्नामेंट लैंग्वेज. आम भारत देश लगी भी काम करि पार्मा. आमर स्ट्राटेजिक इश्यूज बहुत अच्छे. आउ स्टार्टअप मन के तो कहमी जे आपन डिग्री के मत देखन, डिग्री के देखबार कथा नहीं से. हाँ, डिग्रीटा तुमर सबू जिनिस के हेल्प करबा आ गोटे ऑफिशियली इटा गोटे कनेक्ट करबा जिते बेले डॉक्यूमेंट देबे. किंतु स्किल के देखन, स्किल बढ़न. आउ निजर गाँव आमर बहुत प्रोडक्ट अच्छे. आमर कलाहांडीर कथा मुई 2-3टा स्टार्टअप जेन मैंने काम करूछन जेनटा कि मुई इवन कहूली से भी हेते नहीं पढ़वार जेहेतु से माने मौका नहीं मिलला ना फाइनेंशियली और एनी अदर अपॉर्चुनिटी, बट दे आर डूइंग देयर बेस्ट. आउ आमर सम्बलपुरिया मुई सम्बलपुरिया लैंग्वेज रे कहूँ कि आमर सम्बलपुरिया मन के इटा मोर रिक्वेस्ट जे केबे आमर आपण जानि आमर कलाहांडी 3-4टा एबे बढ़िया बढ़िया माने स्टार्टअप लीडर भी बाहर लेन. आमर सम्बलपुरी शाढ़ीर गोटे सुजित मेहर बाहर लेन. आमर मोर गाँ पाखे गोटे पिलाटे अच्छे जे तार बढ़िया स्टार्टअप है. से माने राइस हस्क आसरू एबे ग्रेनुल बनेकर दैट इज यूजफुल फॉर वेरियस स्टील इंडस्ट्री. से पिलार ना हो विभू साहू बोलिकी आमर मोर गाँ पाखे गोटे मोर मामू घर गाँ मुस्कुटी सेने गोटे स्टार्टअप गोटे पिलाटे गोटे प्रोसेस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एवं करुचे. आउ ताके आमे टेक्नोलॉजी देछू. सो ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट आर देयर.
टेक्नोलोजी दरकार टेक्नोलोजी दिया आईपी जेनटा कि माने मार्केट जेनटा फ्रीडम मिलबा तुमके तार राइट भी दिया हवा सीड फंडिंग भी देबार लगी सरकार सब योजना करिछि यू जस्ट ट्राई योर बेस्ट एफर्ट टा करो अल्टीमेटली माने पॉजिटिव एनर्जी विल कम एंड हेल्प यू जेनटा कि यू योरसेल्फ विल बी अ लीडर एंड वेयर वी कैन एंजॉय एंड रीप योर बेनिफिट एंड दैट्स माय सबमिशन टू ऑल ऑफ यू सो never underestimate anyone and yourself also don't underestimate yourself. We all are capable to do many things to achieve the goal and fulfill the dream of Mahatma Gandhi, self-reliance, homegrown ideas and innovation. थैंक यू सर थैंक यू सो मच आपण एते मूल्यवान समय भितर हमको किछि मिनिट्स देले एंड आई बिलीव आज आपण आईपी रिसर्च आउ टेक्नोलॉजी को नहीं कि जहाँ भी इनपुट्स देले आमर सबु दर्शक बंधु मानकु सेटा बहुत बहुत सहाय्य करिवो AIC नालंदा तरफ रु आपन को बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. एंड व्यूअर्स आई बिलीव कि आज सेशन रु यू मस्ट हैव गॉट रियली ग्रेट इनपुट्स एंड इनसाइट्स एमती ही किछि इनसाइट्स और इंस्पिरेशंस को नहीं कि आमे पुणी देखा हबा स्टार्टअप कथार नेक्स्ट एपिसोड रे नमस्कार।